Good morning everyone. I hope everyone is fit and fine at home. So class, today we are continuing with our chapter 2, which is brief overview of Python. And I'm going to revise few topics which we have done in last class. So let's see. First topic is my variable. So variable, it works like a bridge between a user and a program written in Python programming language. How? Let's understand. So class, we have discussed so many times that variable is used to store temporary space in the memory, right? So that we can store the value in the memory and we can access it. Let's take an example. So class, imagine you are making a program, you are a developer by using Python language that you are telling the user to enter a number और यूजर जो नंबर डालेगा वहां तक काउंटिंग आएगी, है ना. एंड आई एम बीइंग अ डेवलपर, आई हैव रिटन अ प्रोग्राम लाइक दिस. ऐसा लॉजिक मैंने इम्प्लीमेंट किया है कि वो काउंटिंग 1 से शुरू होगी लेकिन फिनिश कहाँ तक होगी दैट यूजर विल टेल, एंड यू नो बाय एंटरिंग इट विल टेल मी, ही विल और शी विल टेल मी. ठीक है. सो इमेजिन आई एम शोइंग अ मैसेज कि प्लीज एंटर अ नंबर. यूजर ने डाला 56, तो मेरी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से कहाँ तक चलेगी? 56. इट मीन्स द प्रोग्राम इज टोटली डिपेंड ऑन द यूजर्स इनपुट. मतलब यूजर तो जहां तक काउंटिंग डालेगा वहीं आएगी ना, बिकॉज काउंटिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 1 ऑलवेज, बट व्हाट इज द एंडिंग दैट इज डिपेंडेंट ऑन द यूजर, राइट? सो हियर क्लास, how many variables I need to declare? 1. Why? Because how many value I need to accept from the user? 1. ठीक है. What is the meaning to declare a variable? Because class, user जो value डालेगा वो किससे डालेगा? Keyboard से, and keyboard is an input device, and it is a rule of IPO cycle also. When you take input from the user, first it will go in the memory to process, right? बट यहाँ तो वैल्यू मेमोरी में गई, प्रोसेस के लिए तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है, एंड इट इज डिफरेंट. सो क्लास, जो यूजर ने वैल्यू डाली है वो मेमोरी में गई है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मुझे उस वैल्यू को उठाना है. फ्रॉम वेयर यू नीड टू टेक दैट वैल्यू? फ्रॉम द मेमोरी. ठीक है ना. एंड वी डू नॉट नो मेमोरी लैंग्वेज, तो क्या करें? तो इसके लिए बीच में हमारे पास एक ब्रिज आया. उस ब्रिज का नाम क्या है? वेरिएबल. सो यूजर जब वैल्यू मेमोरी में, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल गो एंड स्टोर इन द मेमोरी, और वहां पर हम पहले से ही एक एरिया अपना डिक्लेयर करके बैठ जाएंगे. हाउ कैन वी डिक्लेयर अ एरिया इन द मेमोरी? विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है. सो दैट यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में जाएगी, लेकिन मेमोरी में नाउ वी वुड बी हैविंग अ नेम ऑफ दैट एरिया वेयर द वैल्यू वुड बी गेटिंग स्टोर्ड. ठीक है. सो मेमोरी में आप ये जो एरिया डिक्लेयर करते हैं एक नाम देके, उसे हम कहते हैं वेरिएबल. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन में आपने क्या लॉजिक लगाया था कि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वहां तक मुझे काउंटिंग लिखनी है. तो अब इजिली आपके पास मेमोरी में एक नाम आ जाएगा. इमेजिन आपने उस नाम मेमोरी में जो एरिया क्रिएट किया है उसका नाम आपने दिया है N1. तो अब यूजर ने, आई डोंट नो, वट एवर यूजर हैज एंटर्ड द वैल्यू, वो किस में जाएगी? मेमोरी में. एंड मेमोरी में देर इज अ स्पेस विद द पर्टिकुलर नेम, एग्जाम्पल N1. अब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इजिली N1 को एक्सेस कर पाएंगे और आप अपना प्रोग्राम इजिली चला पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव सीन डेटा टाइप्स. इंटीजर विच विल होल्ड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट डेसिमल. Float will hold a numerical value with decimal. String can accept any value, but it has to be in double quotes. How to declare and initialize a variable? Like this, age is equal to 19. Class, I have told you with the help of is equal to assignment operator, what you are writing in the right hand side, that will go and store in a left hand side. This number is a numerical but without decimal, so that is known as integer. num is equal to 9, that is again without decimal. That is again an integer. Price is equal to 89.90. It means this value will go in this. This is with decimal, known as float data type. Name is equal to, in the double quotes we are writing SAM SAM. So that value will go and store in the name. That value is coming in a double quote. That's why it is known as string. Print command. Print command is used to display any message or any value of the variable.
In the last class we have seen the practical. Let's see it again. So I'm opening Python here. So let's open Python. So class, if you want to display any message, you need to write print command. So here my message is hello, how are you, with the question mark, and close the bracket. This double quotes is very important because this double quotes is like any message. In this you can enter anything. Here right now I have entered the characters and a special character which is my question mark. Class, when you press enter, right? So when you press enter, so internally Python interpreter has been invoked or called. First it will check or call the compiler who will check the syntax. What is the meaning of syntax? That are you following the correct rules regulation of Python language? मतलब आपने print command को सही तरीके से लिखा है. अगर yes तो वो process करेगा. What is the meaning of process? It will show you the output. Okay class. So that happens in very milliseconds when you press enter. See, फटाफट से हो गया. तो आप imagine भी नहीं कर सकते what would be the speed of Python interpreter to check and to process it. ठीक है. If I make any mistake, like if I forgot to close the double quotes. See, here I have not closed the double quotes. So see, the error will come. It means it is saying कि आपने यहाँ पर double quotes नहीं बंद किए. It is showing with the help of this example. ठीक है. What is the meaning of std in? Standard input. ठीक है. That we will discuss later on. Okay. Now, I want to show you that how to use a print command to display the value of the variable. Imagine I am declaring two variable with the name test1. No, why to write test1? Here I am writing English mein I have scored 99. Imagine, and maths mein I have scored 89. ठीक है. I want to display the marks. So to display I will use print command. Now it's your wish. You want to display two variables together or one by one. First I'll tell you how to display one by one. Like this. English. Print maths. Like this. I want कि नहीं, it should come in a single line. So I'll write print. Which marks you want to show it first? It's based on you. ऐसा नहीं है अगर आपने English पहले declare किया है यहाँ पर तो आप English ही पहले display करेंगे, Maths ही पहले बाद में display करेंगे. No, it could be of any sequence. Here I'm writing English and Maths. It will come like this. And in the next time I'm writing Maths, English. Please make sure the spelling has to be same. Otherwise, if I am writing like this, print and I have written a capital Maths, so sorry, here it will show me the error. वो बोलेगा Maths तो कोई आपने define ही नहीं किया. तो please class be very sure. Okay, the variable name at the time of declaring and at the time of displaying, it has to be all matching. Okay class. Now start with today's topic. How to display message and variable together. So class, in this I have examples show you how to display a message separately and how to display the variable separately. Now I want to show together. So print command use comma to separate your message and the variable's value. For example, test1, I have declared a variable with the name test1 and I have assigned a value 99 to it. I am printing that this message should come along with this variable's value. So the message always comes in a double quotes like this. Double quote open, double quotes close. Because double quotes में तो कुछ भी आ सकता है. तो here I am writing alphabets with the is equal to operator. तो marks of IP is equal to that message I want as it is. तभी मैंने double quotes में दिए comma. साथ में मुझे किसकी value चाहिए? test1 की. What is the value of test1? 99. So when you press enter, what would be the output or result? Marks of IP. This is my message which will come as it is along with is equal to, and it will show me the value of the test1. What is the value of test1 is my 99. It will come like this. So let's see the practical here. So class, this screen though is like full. So here I'm just writing one code to clear the screen that I'll explain you later. Okay, so let's see how to display message and variable name together. ठीक है.
So here I am declaring a variable like English. I am giving a marks 89 to it. ठीक है, उसके बाद I want कि print में आए your English marks is equal to, I have given space because अच्छा नहीं लगेगा ना, value will come along with the message, बिल्कुल साथ साथ आए, तो there should be space between the value and the message, comma English. ठीक है, the space I have entered. When you press enter, output will come like this. Your English mark, can you see the space over here? Because here I have entered the space, that's why it is coming like this, 89. Am I clear, class? Okay. Let's go to the other, how to accept value from the user. Of course, class, here what is happening? Here I am writing the variable and I am giving the value on my own. ठीक है ना, ये तो it's just like I'm checking, you know, I'm just telling you. लेकिन when we are talking about a real world software, in the real world software many things in depends on the user's input. So अभी तो 89 हमने यहाँ पर खुद दिए हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी वैल्यू एक यूज़र को एंटर करनी पड़ती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूज़र. You can accept the value from the user by using which function? Input function. Let's see how you can use the input function. Example 1. So class, can you see it here? Print command. Print command is used to display a message. तो मेरे पास क्या message आएगा? Enter a number. ठीक है? Class, please forget this. Just see input. Input function से क्या होता है? आपको एक कर्सर मिलता है, एक ब्लिंक होता रहता है, जिससे आपको पता चलता है यहाँ पर यू नीड टू एंटर समथिंग, और जो भी आप एंटर करोगे वो कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा? N1 में. फिर आप दोनों को डिस्प्ले करवा रहे हैं बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन. योर नंबर इज इक्वल टू, दिस इज अ मैसेज यू आर डिस्प्लेइंग एंड सेपरेटेड बाय कॉमा यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल. By using input function you never predict the value because message तो I have given enter a number, but N1 के अंदर क्या जाएगा I don't know, because that is totally depends on users wish. User कुछ भी डाल सकता है, ठीक है, because user तो user है, you cannot imagine which kind of user using a Facebook, you know. So print command के through we are combining your message and along with the variables value. So let's see this example first, ठीक है, let's do it practically. Here I am writing print enter a number. This message will come like this. फिर मैंने बोला input function के थ्रू जो यूजर वैल्यू डालेगा, बिकॉज राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट होता है ना, वो कौन से वेरिएबल में जाएगी? N1 में. ठीक है, तो अब when I press enter तो कर्सर ब्लिंक होने लग जाए. Can you see the black cursor over here? It is blinking. It means it is expecting that I will enter some value. So मैंने डाला 56. After that you are writing a print command. Number you entered is comma variable name N1. The number you entered is 56. ठीक है, but what is the problem I am facing here? I am not liking this. भाई printer enter number अलग से आ रहा है, फिर मुझे कोड लिखना पड़ा है, फिर मैं वैल्यू डाल रही हूँ. भाई एक ही बार मैसेज आ जाए ना एंटर अ नंबर, और उसके बाद ही एक स्पेस हो जिसमें आई कैन एंटर द नंबर. सो आई कैन मेक दिस शॉर्ट बाय यूजिंग द एग्जाम्पल 2. इन एग्जाम्पल 2 द सेम प्रोग्राम इज देयर, बट व्हाट इज द शॉर्टकट हेयर? हेयर आई एम यूजिंग ओनली इनपुट फंक्शन विच इज डूइंग 2 टास्क. इनपुट फंक्शन हेयर डिस्प्लेइंग द मैसेज ऑल्सो, एंड यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो किस में जाके स्टोर होगा? N1 में. वॉट वी वर डूइंग हेयर, हम प्रिंटिंग के लिए अलग रह रहे थे और वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए वी वर यूजिंग इनपुट फंक्शन. नाउ हियर इनपुट फंक्शन इज डूइंग 2 थिंग्स. इट इज डिस्प्लेइंग द मैसेज ऑल्सो एंड वट एवर द वैल्यू इट इज गोइंग टू स्टोर इन N1 ऑल्सो, एंड इट इज प्रिंटिंग द सेम योर मैसेज एंड योर वेरिएबल नेम. लेट्स डू इट. हियर आई एम राइटिंग कि यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो N1 में जाएगी. इनपुट एंटर नंबर, ठीक है. So whatever the value would be there, it will come like this. Enter. Actually, I have given a space so that you can, get a space over here. Enter number. I have written 45. Then you can write a print command. ठीक है. Number entered by you is equal to
comma n1. ठीक है class? So class, can you see the difference? Here I am writing a print command, then message is coming, then input command, then value, then print. I have divided one task into 3 lines: print, input and print. Here I am doing only in 2 lines: input and print. So here I have used print command to first show the message and input to take the input. Here I am utilizing input function in 2 ways. First display the message, then store the value in n1 like this. Okay class? Now ways to give value to a variable. First is static. So let's understand what is the meaning of static. So when you give value to a variable by yourself using equals to operator, for example, discount, whose value I have assigned 100, ROI stands for rate of interest, whose value I have defined 700. ठीक है, ये वैल्यू हमने खुद दी है ना, तो ये वैल्यू प्रोग्राम में सेम रहेगी हम, क्योंकि ये वैल्यू हमने खुद दी है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टैटिक. नेक्स्ट इज डायनामिक. डायनामिक मीन्स अनप्रिडिक्टेबल, विच यू आर नॉट अवेयर. When you accept a value from the user by using input function, in this situation you cannot predict the value entered by user. Of course, yes. So this kind of assigning a value to a variable is known as what? Dynamic. Okay class? Static, जब हम variable खुद बनाते हैं उसी को खुद ही value देते हैं, that is known as what? Static. Dynamic, जब हम user से value ले रहे हैं and we are not aware which kind of value user is going to enter, because that is totally unpredictable. Let's say example. If you have shown a message to the user by using print command, like enter a number, and उसके बाद you are using input function to accept a value. So here, can you predict the value? No, because it depends on the user. So class, that is dynamic. It means something is not pre-declared. To understand this concept, let's understand very easy topic and take a very simple example. When to use static or dynamic? Let's take the example of Domino's. What information you give at the time of giving order? First, phone number. Second, name of the pizza. Third is quantity. Here I have not written the size of the pizza like small, medium or large. Okay, so you can skip that. So phone number, name of the pizza and quantity. Imagine you are going to Domino's. When you entered in the Domino's at the order counter, तो वो पहले से ही आपके फेस देख के बताना शुरू कर देता है कि आप ये लेने वाले हैं. नो, इट विल वेट फॉर यू. इट विल वेट व्हेन यू विल ऑर्डर, राइट? ओके. व्हेन यू गोइंग Domino's for the 10th time, again it will ask for the phone number, name of the pizza and the quantity. So it means if everyone is going one by one to the Domino's counter, it will ask the 3 things again and again: phone number, name of the pizza and the quantity. Right? So it means that is my dynamic. Why? Because these 3 things are totally depend on the user. User जब तक ये बताएगा नहीं, they can't process it. Process का मतलब है वो आगे total amount ही नहीं बता पाएंगे. ठीक है, और वो आगे किसी को order भी नहीं दे पाएंगे कि हाँ भाई this kind of pizza should be prepared for this customer, and they are not able to give you the order number also. Right? So these things are dynamic because these things are totally depends on user's wish. Next, price of pizza. Any offer like discount, total amount. Price of the pizza, who is declared that? Of course, Domino's. Offers decided by Domino's. Total amount has been calculated by their software only. ऐसा तो नहीं होता when you're going to Domino's and the order counter and they will say कि okay sir, which kind of pizza you want, quantity and which kind, what price you want to give sir. ऐसा तो कभी नहीं पूछते. Sir, do you want any discount? So of course a customer will say I want 100% discount. Sir, this is your total amount. So I can argue please make it 0, right? Because these price, discount and total amount cannot be asked from a customer. That is already decided. It means एक कंपनी खुद उसको is equal to करके वैल्यू दे के फिक्स कर रहा है. तो this kind of variable known as my static variable. ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल में इन तीनों को कंपनी ने खुद वैल्यू दी है और ये तीनों चीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डायनामिक. इट मींस हियर इन दिस 3 आई नीड टू यूज व्हिच फंक्शन? इनपुट फंक्शन टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर. थैंक यू क्लास.